Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 4.1 question number 4. Write equation for the following statement. Write equation for the following statement. यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट को इक्वेशन में लिखना. फर्स्ट नंबर, द सम ऑफ नंबर x and 4 is 9. The sum of number x and 4 is 9. So let us write. Exercise 4.1 question number 4, first number. The sum of numbers x and 4 is 9. The sum of numbers x and 4 is 9. आंसर. तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, एक स्टेटमेंट को इक्वेशन में लिखना है. द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9. तो सम का मतलब ऐड करना, तो कौन सा नंबर को ऐड करना, x एंड 4. तो x एंड 4 को ऐड करने से कितना मिलता है, 9 मिलता है. सो दैट मीन्स x प्लस 4 equal to 9. Then second number, 2 subtracted from y is 8. 2 subtracted from y is then answer. 2 subtracted from y is 8. इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में लिखना है. 2 subtracted from y, y से 2 को माइनस करने से कितना मिलता है, 8 मिलता है. सो y minus 2 equal to 8. The third number, 10 times a is 10 times a is 70. Answer. 10 times a is 70. स्टेटमेंट को इक्वेशन में लिखना. 2 टाइम्स ए 2a, 3 टाइम्स ए 3a, 5 टाइम्स ए 5a, 10 टाइम्स ए, that means 10a equal to 70. 10a equal to 70. Then IV. The number b divided by 5 the number b divided by 5 gives 6. The number b divided by 5 gives 6. b को 5 में डिवाइड करने से कितना मिलता है, 6 मिलता है. सो दैट मीन्स b बाई 5 equal to 6. Then V. 3/4 of t is
15. 3/4 of t is 15. 3/4 of t is 3/4 of t. 3/4 of t. So 3/4 of t. So that is called 3/4 of को मल्टीप्लाई किए बाद में t लिखिए. So t के नीचे 1 है. So 3 into t 3t by 4 into 1 4 3t by 4. So 3/4 of t is 15. So that means 3t by 4 is equal to 15. Then Vi 7 times m plus 7 7 times m plus 7 gets you 77. Seven times m plus 7 gets you 77. So 2 times m 2m, 3 times m 3m, 7 times m 7m plus 7 7m plus 7 equal to 77. Then V double I 1/4 of a number x. One-fourth of a number x minus 4 gives 4. One-fourth of a number x. One-fourth of a number x minus 4 gives 4. इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में लिखना है. 1/4 of number x. So 1/4 means 1/4 of x. So 1/4 of के बदले मल्टीप्लाई इंटू x. तो x से नीचे 1 होता है, नीचे लिखिए. अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए. 1 इंटू एक्स, सो दैट्स इक्वल टू एक्स. 4 इंटू 1, so that is equal to 4. So x by 4. So 1/4 of a number x, that means x by 4 minus 4 gives 4. So that is x by 4 minus 4 equal to 4. Then V triple I. If you take away if you take away 6 from 6 times y, you get 60.
If you take away 6 from 6 times y, you get 60. इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में लिखना है. If you take away 6 from 6 times y, 6 times y means 6y, take y means minus, so 6y minus 6 that is equal to 60. तो वही लिखे 6y minus 6 that is equal to 60. Then ix. If you add 3 to 1/3 of z, one-third of z, you get 30. If you add 3 to 1/3 of z, you get 30. इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में लिखना. If you add 3 to 1/3 of z, 1/3 of z means z by 3, r3, z by 3 plus 3 equal to 30. z by 3 plus 3 equal to 30. Then next come to question number 5. Write the following equation in statement form. Write the following equation in statement form. यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है वो इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट नंबर p plus 4 equal to 15. So let us write. Question number 5, first number p plus 4 equal to 15. ये इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना. p plus 4, so that means the sum of p and 4 is 15. The sum of p and 4 is 15. Then second number 7 subtracted from m the second equation, that is m minus 7 equal to 3. m minus 7 equal to 3. So how can you write this equation in statement form? 7 subtracted from m gives 3. 7 subtracted from m gives
3. Then third number, 2m equal to 7. 2m इक्वल टू 7, ये इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है. 2m मीन्स 2 टाइम्स m इज इक्वल टू 7. 2 टाइम्स m is 2 times m is 7. Then fourth one, m by 5 is equal to 3. m by 5 is equal to 3. तो कैसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे? फिफ्थ पार्ट ऑफ m इज इक्वल टू 3. m by 5 मीन्स फिफ्थ, 1/5 part of m, that means fifth part of m is equal to 3. Fifth part of m is equal to 3. Then v, 3m by 5 is equal to 6. 3m by 5 is equal to 6. Then fifth part of the product of 3. Fifth part of product of 3 and m is equal to 6. Fifth part of the product of 3 and n is equal to 6. Fifth part of the product of 3 and m, product of 3 and m, so that is equal to 3m. 3m का fifth part, that means 3m by 5 is equal to 6. Then vi, 3p plus 4 is equal to 25. 3p plus 4 is equal to 25. ये स्टेटमेंट को, इक्वेशन को स्टेटमेंट में लिखना. सो 3p मीन्स 3 times p plus 4 is 25. 3 times p plus 4 is 25.
then V double I. 4p minus 2 is equal to 18. 4p minus 2 is equal to 18. 4p means 4 times p minus 2 is 18. तो और भी तरीके से आप लिख सकते हैं 2 subtracted for 4 times p is 18. 2 subtracted from 4 times p is 18. तो इसके बदले गिफ्ट लिखिए, अच्छा होगा. देन फिर ट्रिपल आई. p by 2 plus 2 is equal to 8. p by 2 plus 2 is equal to 8. p by 2 means half of p plus 2 is equal to 8. तो कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म? द सम ऑफ half of p and 2 is 8. Otherwise we can write when 2 is added to half of p, we get 8. When 2 is added to half of p means p by 2. 2 is added, p by 2 plus 2 is equal to 8. We get 8. That means p by 2 plus 2 is equal to 8.